I'm explaining better because I'm explaining now. I will explain the what happened here in this video. I'm going to explain you. So yesterday we know that yesterday we have explained the function. Yesterday we have explained the function of auxin ना. ऑक्सिन के फंक्शन हमने स्टडी किए थे. ऑक्सिन फाइटो हार्मोन्स वी हैव स्टडीड yesterday. तो फाइटो हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन, you know the meaning of phytohormone and plant hormone. So phytohormone is the scientific term, phytohormone is the scientific term, and plant hormone is the common term, right? So all hormones which are synthesized in the plant, if hormone synthesize in plant, synthesize in plant are called phytohormone, right? Okay, so these phytohormones are the chemicals. Yes, tell me. All phytohormones are the organic chemicals. Phytohormones means plant hormones, beta, and these all are the organic molecules. Scientific name. Phytohormone is the scientific name. Phytohormone means plant. Phyto refer the meaning is the plant, right? So phyto means is the plant and hormone is the hormone. So phytohormone is the scientific term and plant hormone is the common term, right? The meaning is same. Ki plant hormone, if organic molecules are synthesized in the plants, those are called phytohormones. Clear? Now here, all hormones we can say phytohormones if they synthesize in the plant. This term will be used in case of the plant hormone, right? So this is the function of the auxin. You can see in this video, you can see easily कि you blinking part, you can see easily कि apical bud is showing in this video, lateral buds also be showing in this video. So you can see कि normal plant you can watch here and lateral buds you can watch here easily. Again I am showing you like this one, ठीक है? In normal plant, this one is the normal plant, okay, and this one lateral buds of the plants, but remove plant growth is well. So if we are discussing about ki there are so many types of the hormones, so yesterday I have told you plant hormones, auxin, gibberellin, cytokinin, these are three types and categorized as a, you know very well, these three hormones are categorized as a PGP or PGI. PGP. These all are the PGP, plant growth promoter, right? These three hormones which synthesize in the plant, these are categorized as a PGP, plant growth promoter. Okay, because these three hormones promote the growth, because these three hormones promote the functions of the plant, right? तो प्लांट्स में जितने भी फंक्शंस हैं उनको प्रमोट करने वाले जो भी हार्मोन्स होते हैं, दोज आर कैटेगराइज एज ए पीजीपी, राइट? तो यू मस्ट बी क्लियर कि पीजीपी, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर. Okay, so these three are the plant growth promoter: auxin, gibberellin, cytokinin, and rest of hormones like ABA. You know ABA? ABA is called the abscisic acid. Abscisic acid, right? Abscisic acid. And next is ethylene. Ethylene is the gaseous hormone, right? So these two hormones, because they inhibit the other functions in the plant, so they are called PGI, right? They are called the PGI. Is that clear? So these all about the plant growth hormones, plant growth promoters, right? Plant growth promoter, what are plant growth promoter, what are plant growth inhibitors? Okay, now again you can see, आगे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए. Now cell, this is the function of
the hormones, right? This is the function especially of the auxin hormone. ये आपका जो function है especially this is all about the auxin hormone. ये आपका auxin का function है apical dominancy, cell elongation and next is the growth of the plant. ठीक, तो yesterday I have told you कि these all functions are carried by the auxin hormone. एपिकल डोमिनेंसी के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि इफ वी कट द लेटरल बर्ड्स, इफ वी कट द एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, लाइक यू कैन सी हियर, देखिए एपिकल डोमिनेंसी व्हाट हियर, cell elongation, arrows are indicating cell elongation. Increasing the girth of the plant is also controlled by the auxin. प्लांट की अगर मोटाई भी बढ़ रही है तो दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई दी ऑक्सिन, राइट? ये ऑक्सिन के जरिए ही सारे फंक्शंस हो रहे हैं. तो एपिकल डोमिनेंसी मीन्स इफ द ग्रोथ ऑफ द एपिकल बर्ड यू कैन सी हियर द एपिकल बर्ड लाइक दिस वन. Suppose that this one is the apical bud, right? This is the apical bud. So if the growth is inhibited, okay, so apical dominancy अगर ऑक्सिन प्लांट में रहेगा तो द प्लांट विल इंक्रीज इन देयर हाइट, दे विल नॉट बी श्रबी, तो प्लांट्स घने नहीं हो पाएंगे. इसलिए क्या करते हैं, वी कट दिस एपिकल पार्ट. इफ वी कट दिस एपिकल पार्ट, देयर आफ्टर द ऑक्सिन विल ऑल्सो बी रिमूव्ड. Now in any plant, if we cut this apical bud, so auxin will also be removed, and this is called apical dominancy, because if the auxin will be present there, the apical bud will show the growth. Okay, आगे देखिए आगे क्या प्रोसेस है. तो this is about the, this diagram is showing that how the plants show their elongation and how the plants show the increasing, and this is about the use of the phytohormone, especially of the auxin in the agriculture field. ठीक है, this is the use of phytohormones in agriculture field. ये agriculture field में phytohormones का use है. एक बार फिर देखिए आप इसको, this one, this is the use इन एग्रीकल्चर फील्ड. ठीक है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि बीड डिस्ट्रक्शन, राइट, बीड डिस्ट्रक्शन, राइट, बीड डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो कैरीड बाई द हार्मोन. बीड डिस्ट्रक्शन, यू नो, बीड अनवांटेड प्लांट्स विच कंपीट द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट. जो प्लांट नॉर्मल प्लांट से कंपीट करते हो, नॉर्मल प्लांट से की ग्रोथ को रोकते हो, जैसे वीट प्लांट है, वीट प्लांट के साथ साथ अगर कोई ग्रासेस भी ग्रो कर रही हैं, हाँ, अनवांटेड प्लांट हैं, तो अगर वीट प्लांट है जो हमारे लिए रिक्वायर्ड प्लांट हैं, अगर उनके साथ और प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं जो जिसके वजह से जो हमारे लिए रिक्वायर्ड प्लांट हैं उनकी ग्रोथ अफेक्ट होती है, तो दोज आर कॉल्ड बीड्स. सो फॉर डिस्ट्रॉइंग द बीड्स, फॉर किलिंग द बीड्स, फॉर किलिंग द बीड्स वी कैन यूज, हाँ, फॉर ऑक्सिन, बी फॉर किलिंग दी बीड्स. बीड्स को किल करने के लिए क्या करते हैं, वी कैन यूज ऑक्सिन, वी कैन यूज ऑक्सिन, राइट. सो ऑक्सिन, देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑक्सिन. आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो यस्टरडे कि IAA, IBA, so these are the different types of the hormones. NAA,